13. On this journey, we have very excellent, overwhelming responses, experiences, guidance, mentorship, everything from you. This journey is absolutely incomplete without you all, our guardians, our speakers, our resource persons, and expert in the audience, because all audience have been the speaker one or another day. So thank you very much. In the meantime, we have faced or victimized for Zoom bombarding. So we have limited our entries to Zoom directly. This event is live on YouTube. Today, the topic is very important. I would like to communicate my sincere regards to Honorable Supreme Court. Thank you, my lords, for considering us. But definitely some action to be taken or must be taken by Ayurvedic fraternity to prove ourselves that we are better than others. This is our theme only. Definitely we are much better than others. I would not like to take any name, any pathy's name. We are reading two sciences simultaneously. 1 hour Ayurveda science, allopathy science. All parameters are modern. So we are expert of modern also. We are expert of our Ayurvedic principles also. Our BMS passed out candidates are generally working in each and every reputed 5-star hospital. Maybe Apollo, maybe Fortis. They are working as RMO in emergency, RMO in OPD, IPD. So they are working. So I don't know what are the points that we have been considered inferior than any others comparison. Name is not wise to take, but definitely it is. I feel myself, because I can't say others, I feel myself that this is absolutely injustice to our traditional heritage of knowledge of health, wisdom of health, and the science of health. So we are in pain. We want to learn today that how RTI can be done, how review petition can be done to change the decisions. I don't know. Lord Shiva will bless us that we will be considered, if not better, then at par with other pathies. Definitely it must be. We are not alternative. Alternative can be those sciences which have been practicing last from 3 centuries only. We are here from thousands of years. So no problem. We are not alternate. We are the mainstream. Government should declare us as mainstream. The equipments, the surgery, the robotic, the laser, these are not invention of allopathy. These are the invention of all physics, biochemistry, chemical chemistry parameters, all are on physics based. Just see the miracle. They are using. Say in the same way we should also be allowed to use, and we are using. In our hospitals also we are using X-ray. In our hospitals also we are using blood analyzer, whatever not. We are using each and every equipment, so we are not inferior to anybody in healthcare, if not better. In my opinion, it is not egoistic statement, but our candidates are studying more. Unnecessary blames, unnecessary black spots destruct the development of science. So we are very much fortunate that we have excellent Prime Minister who is
leading us as brand ambassador for Ayurveda, including yoga, because Ayurveda consists of yoga. Yoga is not different than Ayurveda. Yoga is a part of Ayurveda, Ashtanga Ayurveda, Swasthvrat. It is a part of that. But as the medicines are not impacting there, we not being used, that's why that is being popularized more in comparison to Ayurveda, because of the non-implication, non-invasion, non-application, non-administration of any medicine. We are using medicine, that's why we are restricted by the laws, international laws, domestic laws. That is a different issue. But today, it is our humble request to all the speakers that please guide us on the RTI, on the issue of Supreme Court latest judgment, and on the system of review petition and the expenditure for that. Because if today we are not awakened, definitely our next generation will not forgive us. हमें माफ नहीं करेंगी हमारी पीढ़ियां यदि आज हमने ये सहन कर लिया, तो डेफिनेटली आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। वो हमेशा ये स्टूडेंट सोचेगा कि इतने विद्वान थे फिर भी क्यों नहीं लड़े। ये जिंदगी एक समर है, गाना था जिंदगी एक नई जंग है, तो ये नई जंग शुरू हो गई। रॉबर्ट थॉपर जो आए पहले से वो बदनाम करने वाले आयुर्वेद को, वो सब फॉरेन के थे। ये तो हमारे आंतरिक इंडिया की चीजें हैं और ये तो महामान्य अदालत ने की है, हम उनकी अवमानना कभी नहीं कर सकते। हमें उनसे पूरा सम्मान है, लेकिन हम बहुत दर्द में हैं। हमने जिंदगी भर खटा है, फार्मेसी को डेवलप किया, रिसर्च को डेवलपमेंट किया, क्लिनिकल रिसर्च किया, टीचिंग किया, उसके बाद मेडिको मार्केटिंग किया, और आयुर्वेद के डेवलपमेंट में आज की डेट में भी हम 2 वेबिनार रोज करते हैं। इसके बाद आयुर्वेद वाले इंफीरियर है? कौन है एलोपैथी में ऐसा जो रोज 2 वेबिनारें कर रहा हो, रोज कंटिन्यूअस सीरीज चल रही हो? तो हमारे आयुर्वेद वाले कहीं इंफीरियर नहीं है। आज पूरे गांव का तंत्र हमारे आयुर्वेद वालों पर टिका हुआ है। चाहे उनको आप आरएमपी कह लीजिए, चाहे उनको बीएमएस कह लीजिए, एमडी जनरली जाते नहीं है गांव में, लेकिन आप बीएमएस या आरएमपी जो भी कह लीजिए, सिस्टम वो आयुर्वेद का यूज करते हैं ज्यादातर। ये बात हमारी मजबूरी की है कि हमें एलोपैथी यूज करना पड़ती है, क्योंकि हमारे मेडिसिन नहीं अवेलेबल होते हर गांव के लेवल पर, और सब नहीं होते। कहीं कहीं इमरजेंसी में एलोपैथी यूज करना कहीं बुराई नहीं है किसी की जान बचाने, लेकिन ये जजमेंट जो है वो हमें आंदोलित कर गया है। हम महामान्य अदालत से पुनः प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस डिसीजन को, जो कि एक ट्रेडिशनल हेल्थ हेरिटेज हमारे आयुर्वेद के माथे पर ब्लैक स्पॉट के रूप में इतिहास में कहलाया जाएगा, ये इतिहास बदलने की कृपा करें, हमें हमारा यथोचित सम्मान दें, और उसके जो तरीके हैं वो आज हम कानून विशेषज्ञों से सीखना चाहते हैं। मैं आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी, प्रेसिडेंट विश्व आयुर्वेद परिषद आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट से आग्रह करता हूं उनके स्वागत आशीर्वचन के लिए। आज क्षमा चाहता हूं, ज्यादा दर्द में हूं तो ज्यादा बोल दिया, नहीं तो इतना जल्दी जनरली बोलता नहीं। आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ सर। Namaskar. Good evening to everybody. Respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar on RTI and review petition, legal procedure. Most important subject today we have. So in this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Advocate Amal Chandra Das, Senior Advocate, High Court, Kolkata. Namaskar, sir, and welcome you to this evening webinar. Next, I want to welcome Dr. Rajendra Khatapkar, Medical Legal Advisor, Founder, RK Consultant, ex-President NIMA from Mumbai. Namaskar, sir, and welcome you to this evening webinar. Once again, I welcome all the eminent speakers
distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar. Thank you. Namaskar. Over to Pawanji. Thank you. Thank you very much, sir. I would like to welcome Dr. Namrata Kulshrestha, Vice President of NASYA. Welcome, madam. Dr. Nishant Shukla ji, Dr. Nitin ji, Dr. Lokesh Joshi ji, कार्याध्यक्ष आरोग्य भारती इंदौर मालवा प्रांत, डॉक्टर जगदीश्वर जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत जी, मौमिता जी, आदरणीय अग्निहोत्री सर, मैडम साधना वायकर मैडम, डीन सैम आयुर्वेदिक कॉलेज, एंड अमलचंद जी एंड खटवकर साहेब. Thank you very much. Before inviting our first speaker, Sri Amalchandra ji, I would like to request Professor V.K. Agnihotri ji for his brief preamble. क्योंकि आज मैं बिना परमिशन लिए ज्यादा बोल गया सर, दिल में दर्द ज्यादा था. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. Namaskar, and welcome to all the dignitaries who have joined today this webinar platform. Where we left yesterday, that was a very sensitive and turning point. The fact is that yesterday we were poured with so many objections, directions, and solutions for the sake of for the sake of saving Ayurveda, and we were there informed that any sort of RTI and revision petition and all these things should be applied in an organized manner, because in Kali Yuga it is said that Sanghe Shakti Kalau Yuge. So in that way, it will be definitely a good point to deal with. And as a dream come true, today Professor Pawan Sharma ji made this platform with a new topic that really we are interested, or only we are having a verbal discussion. So for that purpose, RTI and revision petitions concept came in a form of a topic of today's webinar. The fact is, we all honor our court, our judges, our honorable Chief Justice, and everyone. And we do hope, as they gave the decision, they will also do, say, honesty and clear-cut justice with us. We are standing for our sake. We are standing for the cause of the saving Ayurvedic concept, which is a heritage of India, which is a sort of our lifestyle, and which is a way, a beam of life for whole world, not only today or only in simple Chikitsa Parivar. So with these words, that we feel that the agony and the feeling is the same at every angle. Our Dr. Rajendra Katakarji very much here, and he is since advocate also, being a Ayurvedic graduate along with, so he will definitely make a good points of justice we seeked for that background. With these words, I also welcome Dr. Namrata Kulshrestha for the first time in our platform. Of course, all our big dignitaries which are here, our Dinesh Prasad ji, Ajay Das Sahab, Shankar Singh Sahab, our Professor Adarniya Dwivedi ji, our Lokesh Joshi ji, Nitin Umalia ji, और निशांत शुक्ला सर, साधना वाइकर मैडम, आशीष मिश्रा सर, and all the big and our आदरणीय जगदीश डोमा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. And with these words, I return back to this communication for a further contest to Professor Pawan Sharma ji. नमस्कार. बहुत बहुत आभार सर. हम चूंकि भारत में हैं, शुरुआत हमने जरूर इंग्लिश में की हो, लेकिन फिर भी आशा करेंगे सबकी समझ में आने के लिए राष्ट्रभाषा में यदि बात हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. इसीलिए मैंने अपना मोड चेंज कर दिया. आप तो पूरे कोर्ट केस के विज्ञ हैं डॉक्टर साहब राजेंद्र जी. हम शुरुआत में हमारे मित्र इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी के लीगल एडवाइजर डॉक्टर एडवोकेट अमलचंद्र दास जी से, क्योंकि वो अपने सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के जजमेंट के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं गए, लेकिन हम उनसे ये समझना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ आरटीआई एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिव्यू पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद अमलचंद जी आप भी रहिएगा, एक सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया है उसके विषय में हमारे डॉक्टर खटवकर साहब भी हम लोगों को गाइड करेंगे.
पूरे वो दोनों ही है. He is BMS also, he is LLB also. So kindly unmute yourself. अमल जी, आप अनम्यूट कर लीजिए. आप म्यूट हैं. दादाजी एक क्षण के लिए मुझे अनुमति हाँ. दीजिए. हाँ अभी एक क्षण के लिए. जी. अभी जो बता रहा हूँ ना, ये बाबा या का चित्र है. जी. ये बाबा का चित्र है. और अग्निहोत्री जी पीछे जो है ना, बुद्ध का चित्र था. इसीलिए जय हो. आज ये दोनों का जन्मदिन है. लौकिक बड़ा बात छोड़ हैप्पी. करके जय ये हो. महापुरुष का पहले प्रस्ताव करके उसके बाद जी. में तो ये लौकिक चीज है. ये लोग जी, तो पारलौकिक और आध्यात्मिक इस चीज के बारे में तो थोड़ा सा स्मरण कीजिए. हाँ तो पहले से आज ये बता लोगों दिया का कीजिए ये. जन्मदिन है. नहीं, आज सुबह से बता दिया कीजिए ये. इस समय अचानक मत बताया कीजिए, सुबह से बता दिए कीजिए, बेटर वो रहेगा. हाँ अमल चंद जी प्लीज अनम्यूट. अनम्यूट. मैं आपको मैसेज भी रखा हूं. अनम्यूट. उनको कॉल करके बताइए पवन जी. म्यूट हो गया. हाँ जी, स्वागत है. नमस्कार. नमस्कार. I am Amol Das, Advocate High Court, Calcutta. Thanks to all and welcome to all, especially Dr. Pawan Sharma ji for you. ये जो कार्यक्रम जिस हिसाब से organized by you and association, thanks for specially Pawan Sharma ji and thanks to all. आज जो टॉपिक है, what is the RTI? RTI and review petition Supreme Court. Okay. So actually, Right to Information Act 2005. RTI, this is not for lawyers act. This is for the people's act. हमारा जो देश है, देश के अंदर में बहुत सारा करप्शन हो रहा है. known, unknown, internal, external, state, central, administrative, defense, education, medical, so many sectors. But public, judicially, administratively, so many matters, visible, invisible, publicly, officially, there are so many differences from the very beginning till now. Our country, government of India, 12 October 2005, central government RTI इफेक्ट किया. ये प्रपोजल हमारा देश के जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर में ये प्रपोजल अप्रूव हुआ. उसके बाद ये कानून लागू हुआ. ये जो कार्यक्रम Indian every citizen about the administrative information for the public authorities under section 6, application has to be made for obtaining information and for the public authority under legal obligation to provide all information asked for public authority except information covered under section 8. What is under section 8? Inside country, for safety, for security, for our country administration, for our country safety, for defense, especially RTI under section 8
defense related, court order, secret matter, government policy under section RTI, under section 8 covered. Two step. This is one step, state public information officer. There is under government of state. Second step, central public information officer. For any information required from a specific department, every citizen in India first go to state public information officer, जो प्रेयर है, पिटिशन है, उसके ऊपर 10 रुपीस कोर्ट फीस लगाना जरूरी है, मस्ट, फॉर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. एंड सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट मांग रहा है, ये जो लेटर है, लेटर का ऊपर नॉट कोर्ट फीस, देयर इज RTI fees only, postal order 10 rupees. Central for 10 rupees postal order and state for 10 rupees court fees. And after submission of our application for RTI, within 30 days must be report supplied from appropriate authority. If any consider or not consider from appropriate authority, after 30 days, we are going to complain, we are going to appeal state public information officer or central public information officer under section 19 clause 1. Under section clause 19 clause 1, first appeal. After submission of under section 19 clause 1, circumstances on the basis of such and such circumstances rejected first appeal. After that, we are going to second appeal under section 19 clause 2. This is RTI, Right to Information Act 2005. Every citizen in India. After that, review petition. Actually, review petition Supreme Court. Our Indian Constitution, Article 137, our Indian Constitution, there is considered an Civil Procedure Code, CPC, under Order 47, Rule 1. Under Order 47, Rule 1, it means re-examination judicially or administratively. Judicially or administratively. Special authority for review. Special authority for review. Article 145, rule approved by our Parliament. Review power of Supreme Court. After petition, filing, judgment and order by Supreme Court. Rule लागू करेगा और पार्लियामेंट. Rule approved by Parliament, order and judgment through Supreme Court. Under Order 47, Rule 1. This is a shortly review petition.
नहीं, मेरा प्रश्न ये है, एक रिव्यू को पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के कितना खर्चा आता होगा लगभग? खर्चा मतलब एडवोकेट फीस और ऑफिशियल फीस दोनों ही समझ लीजिए। मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, अब हम आपको बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि आयुर्वेद का डॉक्टर इंफीरियर है एलोपैथी डॉक्टर से। समझ गया? उसके उन्होंने लॉजिक दिए, ग्राउंड दिया। हम उसको हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कोर्ट को कि देखिए, हम पे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं कि हम लोग सुपीरियर हैं। जो गलतियां यहाँ हैं वो गलतियां वहां भी हैं। टेक्नोलॉजी किसी की नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारी भी है। फिजिक्स वालों की टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी वालों की टेक्नोलॉजी है, उनने डेवलप की, हम लोग यूज कर रहे हैं। वो एलोपैथी की टेक्नोलॉजी नहीं है, आयुर्वेद की टेक्नोलॉजी नहीं। हम ऐसी यदि रिक्वेस्ट करें तो आपके अनुमान से कितना खर्चा होगा और क्या हम कर सकते हैं क्या ऐसा? ये जो खर्चा जो आप बोला ना, हाँ ये दो तरफ से होगा। हाँ एक जो ड्राफ्टिंग होगा, हाँ पिटिशन होगा, हाँ फाइलिंग होगा, हाँ कोर्ट फीस होगा, स्टैम्प होगा, हाँ सेक्शन खर्चा है, मिसलेनियस खर्चा है, हाँ एडवोकेट फीस अलग है। एडवोकेट का फीस कॉन्फ्रेंस फीस है, हियरिंग फीस है, जितने टाइम लगेगा क्लाइंट के संग में बैठे डिस्कस करके काम आगे बढ़ेगा। ये जो खर्चा दो तरफ से होगा, ऑफिशियली कोर्ट फाइलिंग प्रोसीड्यूर एंड एडवोकेट फीस अलग है। बिल्कुल ठीक बोले आप, बिल्कुल ठीक बोले। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और ये हम लोग 8-10 एसोसिएशन मिलकर कर सकती है। सॉरी, 8-10 एसोसिएशन वगैरह मिलके इसको फाइल कर सकती है। 100%, व्हाई नॉट? आई एम ऑलवेज अच्छा, विद एसोसिएशन। ठीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच अमल चंद जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट a rare combination, doctor and advocate, Dr. Rajendra Khatawkar ji. He is medical legal advisor of various companies, and his consultancy RK Consultants is also there in Mumbai. Welcome, Dr. Rajendra ji. Please unmute. Now stage is yours. Kindly explain the Supreme Court decision Thank you. also. Whatever you want to, please explain in detail, because you are working on the same decision from last 4-5 days. Welcome. Okay, sir. Thank you. Thank Am I audible, sir? Hello. Yes, yes, clear. हाँ, नमस्ते सबको, मेरा सादर प्रणाम। ये इस प्लेटफॉर्म पे मैं काफी बार आया हूँ, धन्यवाद सबसे। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई विल स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। अमल चंद्र दास सर जी ने बहुत अच्छी तरह टॉपिक को डिस्क्राइब किया है, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा अधिक समय न बिताते हुए, हमारा जो अभी 26 अप्रैल 2023 को जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सिविल अपील नंबर 8553 to 8557 of 2014, with the title of State of Gujarat and others versus Dr. P.A. Bhatt and others, इसका जो जजमेंट है, वो जजमेंट वैसे देखा जाए, जजमेंट आने के बाद में पूरे देश भर, whole country is agitated, because as this main subject of this petition is was little bit different. It was related to rights of doctors who are doing service in Gujarat state, and वो गुजरात स्टेट में जो लोग सर्विस करते थे, उनकी सर्विस कंडीशन और पेमेंट इंप्रूव करने के लिए उन्होंने टिक्कू कमीशन करके एक पहले कमेटी बनाई। फिर उसके बाद में वो कमेटी बनाई, वो कमेटी, दैट कमेटी वाज रिलेटेड टू ओनली एलोपैथ डॉक्टर्स। उसके आफ्टर कपल ऑफ इयर्स देन अनदर कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द सर्विस कंडीशंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ISM डॉक्टर्स।
and they gave their order also, and afterwards court of this was the whole story started in Gujarat. ये जो डॉक्टर्स है they were doing service in Gujarat, ISM doctors and allopathic doctors, दोनों के लिए टिक्कू कमीशन का अलग अलग रिपोर्ट अंडर द सेम चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर टिक्कू. सेम चेयरमैन था, उन्होंने एलोपैथी के लिए एक रिपोर्ट दिया, बाद में आईएसएम के लिए भी एक रिपोर्ट दिया. देन गुजरात गवर्नमेंट के ने एक क्वेरी पूछा कि व्हाट शुड बी डन, तो उन्होंने दोनों के लिए सेम इक्वल पेमेंट देना चाहिए करके निर्णय दिया. और उसके बाद में देयर वाज वन जीआर ऑन 1999, देयर वाज वन जीआर by Gujarat State 1199 for equal status. उसके बाद में कुछ doctors were serving in community health services and other schemes. They went in court demanding the equal pay, which ISM doctors were getting equal to MBBS doctors. इन्होंने भी वो चाहिए करके. उसके बाद में when it went in court of law, then Gujarat government quashed that GR 1199 का GR था, वो crash कर दिया and उन्होंने different stand ले लिया. That stand was there two basic questions were there involved, whether people having different education qualification, allopath or ISM doctors, but they are working in the same cadre, whether they should pay equal amount, number one. Second question, I am simplifying those questions in the judgment that same thing is a little bit in complicated manner. The doctors doing, allopathic doctors and ISM doctors doing same work, but their educational qualification is different, whether they should pay in same. And during this judgment, Gujarat government submitted one affidavit which was based on half information. They submitted the affidavit which is mentioned in page 21, para 41. That affidavit is saying that allopathic doctors, ISM doctors are not doing emergency duties, they are not doing surgery, they are not able to give injections, and number 10 points, they are not doing night duties, and these ISM doctors are doing a treatment for wellness and all those things. They are not doing emergency duties, not surgery. Very funny affidavit was submitted by Gujarat judgment, and depending on this, Supreme Court gave judgment on this wrong information. So the remedies what we have currently, there are 2-3 remedies. First is curative petition to have some corrections, miscarriage of justice जो है, वो curative petition with करना चाहिए. दूसरा है review petition, उसके बारे में भी आता हूँ. And third is appeal to larger bench, as this decision is given by two judges. So we have to do the appeal to larger bench. And whether we are having other remedies, we are reviewing and studying in this since last 3-4 years, because very important. I will not go in meticulous details of the case. I am just coming in a nutshell so as to general doctor can understand. While giving the judgment, there are 2 types of judgments. First type of judgment is ratio decidendi, which are compulsory mandatory remarks, which any court will follow as this decision is given by Supreme Court. And obiter dicta, the passing remarks, which I told you, which are in page 21, para 41, which are harmful remarks. Though these remarks are not that much dangerous, but any person
should not do misuse of these remarks in any other further petition. For that purpose, we have to be alert, because these remarks are very dangerous and very havoking. While giving these remarks, that neither Gujarat government nor the Supreme Court has considered the curriculum, the rights, the job card of that those doctors also, and the statistics, how many doctors are all over India, what they are doing, whether they are doing national and government and semi-government जो schemes है, 108 ambulance. There are n number of programs, RBS के बाल सुरक्षा program, NRHM. These are programs are manned by ISM doctors only, as ISM doctors have comprised the backbone of healthcare system of whole nation, and the scenario of every state is not different, sir. I will solicit here, and considering this, out of 36 states and the territories, the many state governments have promulgated the government notification acknowledging the role of ISM doctors in their local healthcare system, and many state governments have done the Act amendment acknowledging the rights of modern medicine as well as Indian Institute of Medicine use in their routine. I have got whole chart and everything. I'm not going in nutshell. So this is the only thing we have to act now, is the only thing, as these are passing remarks. They don't have that much importance, because they are not in a ratio decidendi. But only thing we have to act now is we have to act now only that nobody should use those remarks in any other petition. Now, at the horizon of Supreme Court, many High Court cases are coming, and I have whole statistical data. Approximate every state has going on High Court case, and after that, many special leave petitions are filed with Supreme Court. At least I know 10 to 12 SLPs are going on in Supreme Court. I am working with those Supreme SLPs. That is स्पेशल लीव पिटीशन, हिंदी में जिसे हम विशेष अनुमति याचिका कह सकते हैं. तो ऐसे कितने ही केसेस हमारे चल रहे हैं, तो वी हैव टू बी अलर्ट अबाउट दैट. एंड again I will come back to the today's topic as RTI, which my previous speaker have talked on that, कि जैसे कि उसको सिंपल पेपर के ऊपर आपको जस्ट एप्लीकेशन करना है और 10 रुपए के स्टैम्प पे कोर्ट फी स्टैम्प लगाना है. एंड आई विल कम बैक टू रिव्यू पिटिशन. जैसे खर्चा के ऊपर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो जितना बड़ा लॉयर है, जितना बड़ा काउंसिल है, तो उसका खर्चा उतना बड़ा रहेगा. और कौन से स्टेज पे हम रिव्यू कर रहे हैं, वेदर हाई कोर्ट में कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, सो इट वेरीज. सो कमिंग टू द मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, स्काई इज द लिमिट सर. आई विल कोट यू. हमारा स्पेशल लीव पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो 7846 ऑफ 2016 जो दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, जो 8 अप्रैल 2016 में हम लोग ISM डॉक्टर हारे थे, उसके बाद हम लोग 13 मई 2016 में हम लोग ने रिव्यू पिटिशन किया था, which was not properly represented. That's why we lost that also. Then I myself was involved with the special leave petition under Article 136. And sir, मैंने ही पूरा बारूद जो कैनन में मैंने ही भरा है, only the council,
बड़ा वकील हमने जो खड़ा किया, दैट वाज हरीश साल्वे जी, हु इज अ काउंसिल ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जिसने वोडाफोन का बड़ा केस किया है, जो साल के 6 महीना इंग्लैंड में रहते हैं। उनका सर एक दिन का अपीयरेंस का फी है 30 लाख। एंड हम लोग जिस दिन हमको उनको जो जिस दिन केस है, जिस दिन ब्रीफ करते थे, आधा घंटे का ब्रीफ करते थे, वी यूज्ड टू पे 3 लाख रुपीज, 33 लाख पर डे। और ऐसे हम लोग ने सर अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ 6 से 7 सीटिंग हुए, क्योंकि ज्यादा सीटिंग नहीं हो, क्योंकि हम लोग ने उसमें पूरा ड्राफ्टिंग मैंने ही किया था, एवरीथिंग। लेकिन बड़े कोर्ट में फेस वैल्यू, डॉक्टर खटावकर की फेस वैल्यू नहीं है। हाँ, पवन शर्मा जानते हैं, नम्रता मैडम जानती है, हमारे विष्णु प्रसाद शर्मा जानते हैं, ऑल ओवर आपके जो भी है लोग जानते हैं। लेकिन वहां पर खड़ा रख के फेस वैल्यू की कीमत रहती है, कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग क्या बात कर रहे हैं वो हम पूरा सिस्टमेटिक, कि ताकि इतने बड़ा वकील को हम खड़ा कर रहे हैं कि उसका 1 मिनट भी उसने जज को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये इररिलेवेंट बात कर रहा है, टू द पॉइंट। एंड देन हु इज टॉकिंग, जब दोनों के एडिशनल ये होते हैं, तभी हमारा सक्सेस एश्योर्ड होता है। तो ये जो हमारा एक केस के बारे में हम लोग ने 2 करोड़ से ज्यादा खर्चे किए हैं, और महीने महीने बाय ड्राफ्ट, बाय ड्राफ्ट, चेक भी नहीं चलता है वहां, ड्राफ्ट पहले एडवांस देना पड़ता है। तो जस्ट मैंने एक एक एसएलपी बताया, तो मैंने बोला कि कौन सा वकील खड़ा है, कौन से फोरम पे खड़ा है, उसके ऊपर हमारा ये होता है। और ये सब सुनने के बाद में 99.99% आईएसएम डॉक्टर्स एंड देयर एसोसिएशन बोलते जाने दो, हमारे बस की बात नहीं, हमारे आज की रोटी तो चल रही है। नहीं सर, हम लोग अगर हाथ पर हाथ धरे धरे बैठेंगे, तो हमारे 2 हाथ है, एक हाथ से हम इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन यूज करते हैं, दूसरे हाथ से हम मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन यूज करते हैं, जो हमारा ऑथेंटिक राइट है। तो हम कौन से हाथ से चिकित्सा करेंगे वो है, लेकिन वो अगर हम लोग इसके बारे में अगर हम गाफिल रहे, निदृष्ट रहे, तो हमारा एक हाथ हमारे राइवल एसोसिएशन कब काट के लेके जाएगी, फिर हम ठीक है, फिर हम लोग वही सब बस्ती काढ़े देते रहेंगे, और फिर वही बात करते रहेंगे कि ये सब सिर्फ फिजिक्स की देन है, केमिस्ट्री की देन है, बायोकेमिस्ट्री की देन है, ये सब हम लोग बात रखते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और जब जाग जाएंगे देखेंगे। और दूसरी बात जो आप बात में पहली बात कही है, जो उसे मैं आज दोहराना चाहूंगा, इन ऑल द पिटिशंस High Court had labeled us as alternative systems of medicine. Very poor thing, sir। है हमारा इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जो है आयुर्वेद 5000 साल पुराना है, वैसे यूनानी है, सिद्ध है, जो सोवा रिग्पा है, जो साउथ के इसमें है, वो सभी लगभग 1000 साल पुराने हैं। और जो मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जो है, which is just hardly 200-300 साल पुराना है, और उसको राजाश्रय है। तो हमारे मराठी में कहते हैं काना मागून आले आणि तिकट झाले। तो और उनको राजाश्रय है। देखिए हमारे जो भी कानून है उसको आरएमपी के डेफिनेशन में, those who are registered in इंडियन मेडिकल काउंसिल 1956 के एक्ट में, जो अभी बदल के एनएमसी 2019 का एक्ट हुआ है, बहुत से एक्ट में हमारे पीसीपीएनडीटी में है, बहुत से एक्ट में हमारे रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर करके हमें मान्यता ही नहीं है। तो मेरी सभी एसोसिएशन के यहाँ दिख रहे नस्य के काफी लोग हैं, मैं नीमा का रिप्रेजेंट करता हूँ, सभी लोग साथ में भिड़ के तो अभी करके ये हमारा जो है अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जो लेबल है हमारा हटाना चाहिए, जिसके लिए जुड़ के काम करना चाहिए। और ये जो अभी जो पासिंग रिमार्क्स है उसके लिए हम लोग ने सभी लोग ने जुड़ के, मैं हम लोग तो नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मैं तो काम कर ही रहा हूँ, और मैं सिर्फ एक ही एसोसिएशन के लिए नहीं, जो भी हमारे साथ में बोले नशे के लोग है, कोई भी है, पवन शर्मा जी ने है, सभी लोगों के साथ में हम लोग है। दोस्तों ये सोने का वक्त नहीं है, ये काम करने का वक्त है। अगर सोए तो अगली सब पीढ़ी हमें गालियां देंगी कि पिछले लोगों ने कुछ काम किया नहीं है, हमारे एक हाथ काट के लेके गए, हम देखते रह गए। धन्यवाद।
मैं शॉर्ट में मैंने ये जो पिटिशन है उसका ये किया। अगर किसी ने ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, आयुर्वेद वाले सो नहीं रहे, सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। सोए हुए आदमी को आप जगा सकते हो, लेकिन जो और सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे जगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज ये वक्त है, नीमा जुड़े, नस से जुड़े। हमारी विश्व आयुर्वेद परिषद, ऑल इंडिया आयुर्वेद कांग्रेस अपने अपने स्वार्थों को भूलते हुए आयुर्वेद के नाम पे एक आना हो। क्योंकि एक ये बिल्कुल सही बात कही आपने, 2 करोड़ 5 करोड़ किसी एसोसिएशन में आयुर्वेद की में नहीं है कम से कम। दूसरी जगह क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्री एसोसिएशन को बड़ी तगड़ी मदद करती है, कोई भी एसोसिएशन। हमारे यहाँ वो इवेंट बेस्ड है, हम इवेंट करते हैं, चंदा ले लेते हैं, 2 साल फिर भूल जाते हैं। अदरवाइज इंडस्ट्री के बेस पे आज आईएमए पूरी इंडस्ट्री पे चल रही है, आज पॉलिसी चल रही है इंडस्ट्री की आईएमए के बेस पे, आई इडमा के बेस पे। तो इसीलिए मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, संक्षिप्त में 3-4 पॉइंट कि हमको क्या क्या हम कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल एंड एज हाँ, एक बात और, ये आपने खर्चे तो वकीलों की फेस वैल्यू के बताए। मेरे हिसाब से संविधान में एक अधिकार है कि जो पीड़ित है वो खुद भी अपनी पैरवी कर सकता है। हाँ, कर सकता है। हाँ, तो हम किसी वकील को खड़ा न करें। हमारे जो इतने आयुर्वेद के फायर गोले दागने वाले विद्वान जो हैं, वो खुद जाके पैरवी क्यों ना करें। अलग अलग एसोसिएशन से हमको नहीं चाहिए कोई बड़ा वकील। आयुर्वेद के सिद्धांत वकील क्या समझाएगा जज को। आयुर्वेद के जो चिल्ला चिल्ला के हम लोग जैसे बात करने वाले लोग हैं, वो जाके वहां अदालत में चिल्लाना शुरू करें, जज बाबू का वैसे ही गर्म हो जाए माथा, तो वो लोग ठीक करें। तो ये आयुर्वेद के विद्वानों को भी संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने तर्कों को सिद्ध कर पाए, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। ये फेस वैल्यू आयुर्वेद वालों की क्यों नहीं यूज की जाए, जिनके इंटरनेशनल चेले हैं, जिनके हजारों चेले घूम रहे हैं। झा जी हैं, लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी यहाँ हैं, जो चिल्ला चिल्ला के अदालत में बोलेंगे नहीं हम लोगों में इतने गुण हैं। वो वकील को पहले सिखाओ और वकील जाके फिर अदालत को सिखाए। उससे अच्छा मैं आयुर्वेद के महानुभावों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तर्क बनाए। इंडिविजुअल भी लड़ सकता है, और हजारों पिटीशन जब कोर्ट पे जाएगी तब महामान्य अदालत को जरूर हमारा दर्द समझ में आएगा कि हाँ, हम दर्द में है। मैं आदरणीय खटमकर साहब से फिर पुनः प्रार्थना करूंगा, हम क्या क्या कर सकते हैं इन ब्रीफ। हाँ सर, मुझे और एक थोड़ी सी, मैं उसके ऊपर आपके मुद्दे पर आऊंगा। एक चीज मैं जस्ट शुरू में बोलना थोड़ा सा रह गया मुझसे, थोड़ा सा भावना की इसमें। जैसे हम लोग क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है कि हमारा क्लिनिक, हमारा जो ऑफिस है बाद में देखेंगे जब गले तक आएगा। अभी ये जो पिटिशन है, यही पिटिशन है, जितने पिटिशन हम लोग लड़ते हैं हर एक पिटिशन है सर 8 से 10-12 साल पुराना है। अभी ये जो पिटिशन है आप उसके ऊपर देखेंगे तो ये 2014 का पिटिशन है, और गुजरात का ही है। अभी गुजरात में हमारा हर एक स्टेट में हर एक एसोसिएशन एक्टिव है, भले वो नीमा है, नस्य है सर। वहाँ के एक्टिविस्ट लोगों का भी ये पिटिशन मालूम नहीं है। जब ये हारने के बाद में, एक बार हार गए ना, उसके बाद में उस जीत हासिल करना बहुत बहुत मुश्किल है। तभी हमको बड़े से बड़ा ही वकील खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि एक बार आप हार गए, 2 बार आप हार गए, और इसके पहले तो कोई इंसान जागता है नहीं। ये फैक्ट है सर। ये मैं जब से पिछले 40 साल से मैं इस मेडिकल लीगल फील्ड में हूँ। जब मैं पहली बीएमएस की डिग्री ली मैंने 82 में, एंड 87 में आई पास एलएलबी। तभी से मैं देख रहा हूँ सर, सब लोग जब तक गले तक नहीं आता है कोई भी जागता नहीं, और जब तक 1 बार 2 बार हार गए तो आपको बड़ा वकील खड़ा ही करना है। अमल चंद्र दास सर जी भी, उनका वही लगभग है। वहां पर फेस वैल्यू रहता है सर। वहां पर कोई किसी को, पवन शर्मा को, कटावकर को हाँ सुनेंगे, लेकिन उसका वैल्यू इतना नहीं है सर। इट इज अ फैक्ट, इट इज फैक्ट। अगर हमें जीतना है तो देखिए, हम आज के जमाने में भी अच्छा टाई कोट पहन के जाते हैं। क्यों? आज के जमाने है ना, उसके हिसाब से चलना पड़ता है।
तो इट्स अ मतलब फैक्ट. मैं इसका ये समझू सर कि केवल न्याय अमीरों के लिए रिजर्व है. Yes, unfortunately, I can say those who can purchase. Those who Those can who can purchase. purchase. है It ना? is a fact. It is a fact. ये बड़ा कड़वा कमेंट है I लेकिन think बड़ा मेरे को स्पीकर इसके ऊपर कुछ कमेंट से करेंगे. अमल जी. अनम्यूट कीजिए. इट्स ए बिटर ट्रूथ. आप म्यूट हैं. अमल जी म्यूट हैं आप. अनम्यूट कीजिए. आपका स्पीकर या तो स्पेस बार दबाइए या तो हेलो. उनको शायद सुनाई नहीं दे रहा है. नहीं जानता. आप कॉल करके बताइए, वो बात कर रहे हैं कुछ. डॉक्टर कृष्णेंदु कुछ कहना चाहते हैं तब तक. आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर कृष्णेंदु. प्लीज इंट्रोड्यूस कृष्णेंदु जी. सर मैं डॉक्टर कृष्णेंदु हूँ फ्रॉम वेस्ट बंगाल. सो मेरा कुछ बोलना चाहता हूँ सीनियरों के परमिशन लेकर, अगर मुझे कुछ बोलने की इजाजत हो तो. किस विषय पे? तो सर कुछ बात है. जी सर. ये इसी विषय में ना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय में. आपकी आवाज नहीं आ रही है कृष्णेंदु जी. शायद नेटवर्क लो है, ब्रेक हो रहा है आपका. सर तब तक अमल सर को कॉल करके बोलिए ना, कुछ बोलना चाहते हैं. कॉल करके बोलिए. अमल जी अनम्यूट कीजिए ना. कॉल करिए अगर फोन नंबर है तो. हाँ सर, मैं जो बोलना चाहता हूँ, मेरे उम्र उतना ज्यादा नहीं है और तजुर्बा भी उतना ज्यादा नहीं है. फिर भी सर मेरा जितना लीगल में. हाँ, हो गई बात. हाँ बोलिए. कौन जी बात हुई उनसे, अमल से? हाँ वही ना. हाँ नहीं, फिर भी उन्होंने अनम्यूट किया नहीं. ठीक है, तब तक ये दूसरे साहब क्या बोल रहे हैं, उनको जो भी बोलना है. I would like to, make a little discussion. Just give me an Please. opportunity. Thank you. प्लीज वेलकम. Should I go? यस प्लीज. All right. My name is AJ Das, and my practice is really for the last 50 years or over in USA. I'm visiting India on a short while. Practicing what, sir? Pardon me? Practicing what? Medicine, law? In medicine, also medical legal, and I've been called as a expert witness in many of the legal areas. In other words, I'm in a process of understanding if somebody, a surgeon, whether a surgeon or not, is he holding the knife in the right hand properly or the left hand properly? And if I say it is wrong, that poor person gets, debarred or rather loses license to that extent. But I'm not, that kind of person. But anyway, let me say I have had practice experience in USA and many other parts of the world for last 50 years and over. Right now, I'm semi-retired. However, I have been understanding from the discussion that you are having between Ayurvedic and allopathic and few other medical fields, which in my opinion, I don't see why they should be partitioned or firewalled against each other. The point I'm saying, every branch in medicine or so-called medicine has contributed to the axis, the main part of the knowledge of healing arts.
The definition of health, as I see it, is the well-being of mind, body, environment, including your economic status. And if you don't combine all of them, you're not serving the medicine. All you're doing is just serving yourself. That's the conclusion I see it. Now, I will just give two examples. Who's right and wrong? I'm not here to analyze, or rather look into deeply the legal side of it. Legal side is man-created. As the society progressed, it all depends on what's right for the society now and not in future. And future, it always changes, the legal part. However, the well-being part always stays, and it improves with the knowledge of human being, as I see it. Now, let me put it another way. I'll give two examples. I, being allopathic physician, traveling 33,000 feet above in the sky, has been called, is there a doctor in the house? And here I slowly go. By that time, I see 3 or 4 young persons sitting around a young lady from Middle East who's flat on the floor and unconscious. Up on the 33,000 feet, there is no CT scan, no EKG machine, or anything that you will have it in hand to call for and say, oh, let's do it this, let's do that. All you have is your 2 bare hands, and there are 5 medicine on the plane. One is Tylenol, acetaminophen, or a smelling salt, or a little oxygen cylinder, a little stethoscope, and a blood pressure machine. That's all you have to treat a patient who's about to die. Now, here I am watching it, and everybody has the blood pressure on, the stethoscope there, and trying to listen to the patient when the big sound, booming sound of the jet plane is going on, and I don't know how they can listen to all those in a stethoscope and the blood pressure and all those things. After a while, I took over, and I could feel the pulse is running almost like 150, 160, or 170 per minute, and this patient cannot survive for long and will soon die up 33,000 feet above. And I cannot send it to the emergency room. So the reason I'm saying, this is where the experience— In brief, sir, in brief. All right, this is where the experience comes in. I don't care whose experience it is. Every doctor in allopathic is taught about the carotid body around the neck, and if you rub it, your heart slows down. You don't need any medicine. And I did just that. The patient woke up and is alive today. Of course, I can talk more things in my life. So in conclusion, all I'm saying is that I respect every branches of medicine if they stay within that, including homeopathy, allopathy. Everybody gave us a subject to learn, and allopathy too. And I'm not going to put anybody in front of somebody else saying he's the best or he's the best. So this is my conclusion. Thank you very much. And it has happened to us, sir. We are in pain. Unfortunately, we are in pain due to our persons only, not by any other pathy or not by any other person. By our persons only, we have been forced to consider ourselves as inferior, what we are not, because we are 5,000 years old, and before 300 years, everything was taken care of by Ayurveda only. So Unani, Ayurveda, every pathy has some time of its heritage. So we are in pain, and respected Supreme Court has given a decision considering us as inferior. So what should be the option? This is the topic of the day. We are so on 26th of April, that decision has been taken by Supreme Court with a long legal process. And now we are awakened that what is to be done. So we are learning. The question I would raise, do you consider yourself to be inferior? No, not at all. No, sir. But we have been branded by the court. This is wrong justice. The point I'm saying that
Sir, let me tell you, sir. Yes. Please, khatam kar sab, khatam kar. It We is will have debate, wrongly. sir. Please do join every day. You all Please do know, join It every is day. wrongly. Because two gone webinars, to I have to the conduct two Supreme webinars. Court that this At is 9 p.m., our next webinar will start by Nasya. So we have Ayurvedic limited time. started many thousand years ago. It all came down to our modern medicine. we appreciated We are your a stand, part sir. of- Thank you. We are a part of Ayurvedic because the medical side of the extract of medicine, when we learn our pharmacology, we learn every bit of Ayurvedic without realizing that. However, that does not mean only with pharmacology Ayurvedic can stay alive or continue the medication. Right. Yes, sir. Thank you. If you can Today we say, have limited time, sir. I am all excused. right, sorry, all right, I'll Please, cut please. it off right now then. Thank you. Yes. Thank So you. please do join every day because All we right, are I conducting will. webinar every day. I will. Thank you. I Thank was you. fortunate enough, and thanks again to the group for inviting me. Thank you, sir. Rajan ji, you were telling something in the last as conclusion. हाँ, बस वही कि हमें it is time to act now. No, you are discussing 4 options. Yes, curative petition, What are those 4 options? curative petition, review petition, and appeal to larger bench. As this decision is given by 2 benches, so we have to appeal to more than 3 or 5 benches. Judge के पास में हमें appeal करना चाहिए. ये 3 तो पक्के हैं. Now we are thinking इसके बारे में और अलावा भी कुछ ऑप्शन है क्या. और ये जस्ट इन शॉर्ट में रिव्यू और इसका बोलता हूँ फर्क. रिव्यू पिटिशन जो which was the टॉक का सब्जेक्ट था. रिव्यू पिटिशन इसमें री एग्जामिनेशन होता है बाय सेम जज एंड सेम बेंच, सेम कोर्ट के बारे में सिर्फ, एंड इट हैज टू बी फाइल्ड विद इन 90 days. उसके बारे में कुछ अगर अपना कुछ एविडेंस या कुछ इंपॉर्टेंट चीज रह गई हो तो रिव्यू पिटिशन हो जाता है. अगर रिव्यू पिटिशन इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, एडमिट करना नहीं करना, इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. इट इज ऑल्सो should be submitted within 90 days. दोनों रिव्यू और रिवीजन 90 days में ही करने हैं. जैसे मैंने डिफरेंस बोला कि रिवीजन जो है इट इज एट द डिस्क्रिशन, इट इज पावर ऑफ द हाई कोर्ट, इट इज नॉट सब्सटेंशियल राइट. अपील जो है वो आपका सब्सटेंशियल राइट होता है. अपील कैन बी फाइल्ड विद इन 30 days. जस्ट एक बेसिक इतने ही ध्यान रखिए, बाकी सब ढेर सारे किसी के ध्यान में नहीं रहते. और अपील टू लार्जर बेंच जो 3 रेमेडीज है, क्यूरेटिव पिटिशन, रिव्यू पिटिशन और अपील टू लार्जर बेंच, ये तो 3 पक्के हैं. और हमारे 4 दिन में 4 5 वेबिनार 2 3 घंटे के हुए. पूरा हमारा प्रोफेशनल क्लिनिक सब बंद करके हम लोग चल रहा है. एज आपके अटेंडीज जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के, और इस आज के सेमिनार में जितने भी लोग हैं, मैं सबसे आपको अपील करूंगा कि कुछ एक्ट ना हो. मेरा नंबर ले लीजिए और कुछ कोई भी एसोसिएशन रहे मुझे बुलाइए, और मेरे कुछ भी इनपुट है मैं मेरा नंबर चैट में भी डालता हूँ और वापस मैं दोहराता हूँ अगर कोई लेना है. माय मोबाइल नंबर इज 922. चैट बॉक्स में डाल दीजिए ना प्लीज. हाँ डालता हूँ. 92233222959. हाँ, एंड चैट बॉक्स में भी आई एम डॉक्टर खटावकर. आई हैव डन BAMS LLB, BMS 82 में किया है, LLB in 87 from Bombay University, and I have been involved in many High Court and Supreme Courts all over India. So कुछ भी रहेगा तो इधर उधर इंस्टेड ऑफ अंधेरे में. एक बात आखिरी पूछना चाहता था. हाँ. यदि हर जगह से एक अपील की जाए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में तो अपील हो नहीं सकती, ना रिव्यू पिटीशन हो सकती, ना क्यूरेटिव. सुप्रीम कोर्ट में ही होगी. हाँ. यदि 10-20 एसोसिएशन मिलकर करें तो हो सकती है क्या? और यदि हम फाइल करते समय हम किसी से भी फाइल कराते जाए, वो 10 एसोसिएशन अलग अलग फाइल कर सकती हैं क्या? हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन सबसे मैं दुख के साथ ये कहना चाहूंगा, कोई भी हमारे ISM के फील्ड में कम से कम 50 से ज्यादा एसोसिएशन है. 50 से ज्यादा. Nobody is coming under same umbrella. Nobody.
I had tried with Dr. Katyar, Katoch, and Dr. Bhatt, Naren Bhatt, to have a federation of all association. नहीं, लेकिन But सर I'm जैसा failed. जैसा पैसा खर्चा करने की बात आती है ना, सब लोग पीछे हट जाते हैं। मैं बोला ना, मैंने बोला 2016 का पिटीशन है, 1.5 साल में हम लोग ने 2 करोड़ ओनली इंटेंशन कि अगर ये हम हारते हैं तो उसका उपयोग राइवल एसोसिएशन दूसरे केस में करेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरा बहुत नंबर अच्छी डाला है कर रही मैंने अभी। चैट बॉक्स में, वापस दोहराता हूँ, डॉक्टर ठीक, राजेंद्र मैंने किताब वो डाल दिया आपने, देख लेंगे, हाँ। डोंट वरी। So now I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir, for his brief conclusion. Then we will shift to our next webinar organized by NUS authorities. I am really grateful to Dr. Prashant, Dr. Raman, Dr. Namrata, Dr. Sumit, everybody. So Professor V.K. Agnihotri sir. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. And again, welcome to all the dignitaries who have just given his very, very, very valuable thoughts, inputs in the current scenarios topic. I was listening and I found that really it's a matter of great concern with all the Ayurveda lovers and all the practitioners, along with the teachers, manufacturers, and researchers. But the thing comes, who should come first and from where the money be generated? Because none of the platform of Ayurvedic concern or association is so rich as our counterpart. Neither they are having any sort of that support financially. It may be morally. So Dr. Rajendra Katkarji's suggestion was it is a face value which is important in the Supreme Court.